I want to widen this. How does one explain this Maha mess with 24 hours to go for that nomination deadline for Bihar? Pooja Tripathi, National Spokesperson Congress. Naval Kishore, National Spokesperson RJD. Sanju Verma, National Spokesperson BJP. And Shweta Priya, Spokesperson JDU, are joining us at this moment. And I want to start with the Congress because they seem to be in the real Maha mess at the moment. Pooja Tripathi, Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav went together on a Bihar Yatra, Vote Adhikar Yatra, but when it comes to the crucial issue of how do you share seats, there is no agreement. 24 hours to go and we don't even have a formal official list of the Congress party. Kindly explain this. Rajdeep, good evening to everyone. Rajdeep, you would get the formal seat sharing plan in a few hours. You know, in Mahagathbandhan, every partner is an equal partner. There's no senior or a junior partner, which happens in NDA that, you know, you get a call from Delhi and seats are decided and you distribute it among your family members. So seat sharing is always a difficult road when partners are equal. I'm talking about the India Alliance partners here. And there would be some seats where somebody wants to... No, but you could have settled this days ago. Why last minute? No, ma'am, I know that seat sharing is difficult, but surely this could have been settled days ago. Now there is talk of friendly fights. So friendly fights, I see Nitish Kumar ji fielding candidates in 2 seats where LJP has official NDA candidates, and Jitan Ram Manjhi has gone on 6 seats. Sorry, Jitan Ram Manjhi has gone on to say that we'll Nitish ji sahi kar rahe hain, hum bhi 2 seaton pe seat karenge. So friendly fights are happening everywhere. So when the consensus does not arrive at those seats, which are the bone of contention for the Mahagathbandhan partners, I think there would be friendly fights, but that's too much of a preconceived notion. Let's wait for a few hours, and our seat sharing formula would be out in a few hours. Okay. You're saying a seat sharing formula will be Naval Kishore ji? Will this seat sharing formula be out in a few hours? Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav have had phone conversations. Meetings went on till 2 a.m. Now we are talking at 7:20 in the evening. We still don't have official list. Ye ho kya raha hai? We don't even know whether Mukesh Saini, he was to have a press conference. That is cancelled. It looks like Mahagathbandhan or Maha mess. राजीव जी, बड़ी जीत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है. जहां पे जीत की संभावना ही नहीं है, वहां पर कैंडिडेट की घोषणा करने में क्या दिक्कत है? कैंडिडेट घोषणा करने के बाद भी वहां पे लोग नाराज रहते हैं. दे आर पीपल सेइंग दैट all is, sometimes they are saying all is well, the other moment they are saying all is not well. From Delhi to Patna and Patna to Delhi, कोई उठा के ले जाता है, कोई उठा के लाता है. This kind of mess is there in the other side. यहाँ पे तो there is clarity कि we have to exercise so that each and every seat is winnable. और जब बड़ी जीत के तरफ आप बढ़ते हैं तो मेहनत भी ऐसे ही करते हैं. ये तो जितने भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है वो महागठबंधन की तरफ है. एक सीट पे 20-20 लोग हैं, तो आपको तय करना पड़ेगा ना कि जीत कैसे निश्चित किया जाए. Therefore it is taking time. कल भर टाइम है और कल बहुत है. बहुत लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया है और बाकी कर देंगे. One day is enough time to do that. अगर हम पहले भी कर दिए होते तब भी हो सकता था कि लास्ट डे में लोग नॉमिनेशन कर दे. कोई जरूरी नहीं है कि सीट डिसाइड होते ही लोग नॉमिनेशन कर दें. So Rajiv, there is no problem. The problem is actually on the other side. One is putting candidate, okay. All is well. Another candidate. Okay, you're saying let's go to the other side. Let's go to the other side. Sanju Verma, there is a sense that the NDA is claiming all is well with us, but it required Amit Shah to fly down to Patna to be in talks with the likes of Upendra Kushwaha. There are a lot of feathers which have been ruffled that have had to be smoothened. So it's not as if all is well even within the NDA. There's talk there also of those who've been denied tickets engaging in friendly fights. So would you agree that this time dealing with allies has been a big challenge even for the BJP? Rajdeep, I would like to first and foremost say a couple of lines. वक्त से छीन लाएंगे हम हमारे हिस्से की जीत. वक्त से छीन लाएंगे हम हमारे हिस्से की जीत. वो दौर ही क्या जो हमारा नहीं. वो दौर ही क्या जो हमारा नहीं. और फिलहाल ये नरेंद्र मोदी जी का दौर है. This is the Modi era. The Modi juggernaut is unstoppable.
And now let me come to the limited point that you've asked, a very pertinent question. Has the seat sharing of the NDA been announced? Yes, 101 each. JDU and BJP will fight 29 seats. Chirag Paswan's party will fight, and 6 each will be fought by Upendra Kushwaha and Jiten Ram Manjhi's parties. So the arithmetic is clear. Out of 243 seats, the BJP-led NDA has already allotted symbols on 237 seats. Now, Tejashwi Yadav in the last 72 hours has been camping on and off in Delhi. Did he get audience with Rahul Gandhi? No. Lalu Yadav and Mallikarjun Kharge have been having hectic parleys. KC Venugopal and Tejashwi Yadav have been having hectic parleys, whereas we are less than 24 hours away from the last day of nomination for the first phase of Bihar elections. Rajdeep ji, आपको याद होगा, बचपन में there were many students, you know, board exams के एक दिन पहले पूछते थे, भाई syllabus तो बताओ, syllabus क्या है? तो कांग्रेस पार्टी आरजेडी का वो हाल है, इनके पास अभी तक सिलेबस की जानकारी नहीं है. मोदी, अमित शाह एंड पार्टी ने ऑलरेडी 2 बार रिवीजन भी कर ली है. But I'll come to the moot point, please. You know, I heard the others. Let me just finish. नहीं, उनका छोड़िए, आपका बताइए. मैं अपना बता रही हूँ, अभी ध्यान से सुनिए. You are a seasoned banker, and I want to say one thing very categorically. I think the bone of contention in the Mahagathbandhan is the Simanchal region. Because if you look at the pronouncements by various people, Rajdeep, I did not heckle. I don't know who's this man who's been giving background music. I was absolutely quiet. Just finish. I'm giving you 30. Please let us all be pleasant to each other. You make your point for another 30 seconds. I won't interrupt you. Thank you. Now, in the Simanchal region, you see the CPI-ML want to extract their pound of flesh. Congress, last time got 5 seats from Simanchal region. They don't want to, give anything away to the RJD on a platter. The RJD also won 5 seats from Simanchal region. The RJD does not want to back off. Whereas, I think within the BJP, what matters is that we have been able to forge a consensus because of just one reason. I will again quote JP Nadda. हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास नियत है. Whereas for the other side, I will tell them, कहीं की ईट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनका जोड़ा. You guys cannot even forge a consensus on basic issues. Okay, ma'am. I've heard you. No, your time is up, ma'am. Ma'am, I've heard you now patiently. I've allowed your shairi. I've heard you patiently. Shweta Priya, spokesperson JDU, is all really well. What I gather is a number of JDU senior leaders are upset. First, because you all conceded they believe too many seats to the BJP. They wanted the JDU to assert itself. They feel that the JDU has given far too many seats to the BJP this time, and the fear is therefore, after election, BJP will call the shots. The regional party Nitish Kumar will be used and then after a few months thrown away. क्या ये सच है? Is there any truth to that? No, firstly, I would like to say pranam to all your viewers and all the respected panelists here and you. And I'm honored that you have invited me for this election debate. And here I would like to clear one thing, that in NDA alliance, there is no difference. And in multiple interviews, you would have seen that all the 5 parties have clearly stated that the face will be of this honorable face will be of our honorable CM, Chief Minister Nitish ji. And seat sharing has been done harmoniously in NDA alliance under the guidance and supervision of our honorable Prime Minister, Mr. Modi, and our honorable Chief Minister Nitish ji. And but we are told there's a lot of tension. Shweta, we are told a lot of tension still exists. There's still a lot of tension between Lok Janshakti Party and JDU. There are seats which Lok Janshakti Party has been given that JDU is upset about. Chirag Paswan being given so much of importance. There is tension. Just one thing I would like to clear it here, that
एनडीए मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्र, और लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है और उसका नींव ही यही है कि उसमें वाद और प्रतिवाद होता है। बात करने को आप टेंशन नहीं बोल सकते हैं। आप देख लीजिए, बहुत ही कंसेंसस के साथ हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है अपने सीट्स को, कैंडिडेट्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं 237 सीट्स पे, एज माय कोलीग हैज जस्ट रिसेंटली मेंशन दैट, और हमारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है। आप देख लें, महागठबंधन में अगर ये लोग कंसेंसस सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं कर पा रहे हैं कि हम सीट शेयरिंग उनके बीच में नहीं हो पा रहा है, वो सीएम फेस डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ये समझिए, वो क्लेम करते हैं वो बिहार इलेक्शन जीतेंगे, वो किसी भी पॉइंट पे डिसीजन कैसे ले पाएंगे? वो बिहार का विकास क्या कर पाएंगे? वो एक ठीक है परिवार बेस में मैडम 20 साल से आपकी सरकार रही है। ये सवाल विकास कितना हुआ नहीं हुआ ये पहले आपको पूछा जाएगा, और आज तो हम सीटों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे चुनाव बढ़ेगा विकास के सवाल आपको ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार आपकी रही है 20 सालों से। पूजा त्रिपाठी, यू वांट टू रिस्पॉन्ड द परसेप्शन, द ऑप्टिक्स, यू सी पॉलिटिक्स, पूजा, okay, in Bihar, in what you would have imagined, means I have been the victim of that situation from 1990 to 2005. I have been there. I have felt, I cannot explain what I have felt. I have been deprived of my right to life. That means okay, a that is, dignified madam, life. we are in 2025. We are in 2025. Just a minute. I have heard you now. Pooja, you want to respond? Because the fact is, politics is about perception, about optics. And the optics is that the Mahagठबंधन at the moment is struggling to get its act together. NDA, for whatever reason, is far more intact. You know, Rajdeep, Perception तो होता है ना? नहीं, राजदीप, as Naval Kishore said कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका जनाधार है, and it's hard to decide. Just now संजय जी was saying कि रिविजन हो गया है, नीति है, नियत है, घर में ही पेपर सेट करना है, घर में ही कैंडिडेट को डिक्लेयर करना है. This is उपेंद्र कुशवाहा giving party symbol to his own wife, and then this is जितिन राम मांझी, बहू, दामाद, समधन, सबको टिकट मिल रहा है घर में. तो जब इतना पारिवारिक माहौल है तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, सीट डिस्ट्रीब्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं है. But that's not the case with Mahagठबंधन. You know, we are looking for leaders who have their base, who have their electoral base, and that's why I agree on optics. I agree that it should have been done earlier, but there everybody is an equal partner, everybody is an equal bargaining power, and that's why it's taking time. It's just a matter of few hours. The list will be out, and hopefully, no, very confidently, I'm saying that we'll be able to form a government on the pitch of Kaam Kisan, Karkhana, and Kamai. Right. Okay, I'm going to, for a moment also, no, just a minute, I'm going to ask you, Naval Kishore ji, ये जो नए candidates की बात हो रही है, new faces are being given tickets by the RJD, they want to go beyond that traditional Muslim Yadav base. But when I see the likes of Shahabuddin's son, Shahabuddin was seen as the Don of Siwan, spent several years in jail, उसके बेटे को आपने टिकट दी है. तो are you really looking for a new image for the RJD? Or is the RJD still a party, as was mentioned by Shweta ji, still trapped somewhere in its old bad habits? राजीव जी, पता नहीं आज आप अनइक्वल कैसे देख रहे हैं. आपने अनंत सिंह का नाम नहीं लिया, AK-47 वाले टाइप का नाम नहीं लिया, आपने आनंद मोहन के बेटे का नाम नहीं लिया. ऐसे कई लोग हैं जो वहां पे हैं, आपने भी इनका नाम लिया नहीं. जहां तक यहाँ पे सवाल है, ये जितने भी सीट दिए जा रहे हैं वो 100% सीट, उनका भी नाम लूंगा मैं अभी, डोंट वरी, उनका नाम आ रहा है. संजू वर्मा को मैं और उनके भी बारे में पूछूंगा, डोंट वरी. आप देखिए, जो कैंडिडेट हमारे हैं, उन कैंडिडेट का पूरा चीज पब्लिक डोमेन में है. उनकी जो जीत है या उनका पब्लिक परसेप्शन है, वो सब कुछ है सामने में. तो उसमें हम कहाँ पीछे हट रहे हैं? सवाल ही नहीं है. सवाल है कि सबसे बड़ा जीत महागठबंधन के पास आने जा रहा है. यही समस्या है संजीव वर्मा का कि वो महागठबंधन में नहीं बोल रही है, अपने आचरण के हिसाब से ठगबंधन बोल रही है. जितने दंगाई लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, हिंसावादी लोग हैं, देखिए यहाँ पर योगी जी आकर कहते हैं कि बुर्का नहीं विकास चाहिए. अरे भाई साहब, अपने यहाँ तो विकास करके दिखा दो.
किस तरह का है बुलडोजर राज को सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है? No, madam, no, don't intervene. No intervention. Please, no intervention. No intervention, Shweta ji. No, please put your mic down. Shweta ji, please let him complete. No, he did not intervene with you. Please keep her mic down. Go ahead. नवल किशोर खत्म करिए अपनी बात. हाँ, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता एक बड़ी जीत के लिए इंतजार कर रही है और महागठबंधन में महासंभावना दिख रहा है. यही समस्या हमारे पास है कि हम कैसे उसको अंतिम रूप दें ताकि Okay. आप कह रहे हैं महासंभावना है. Everybody wants to be on. अच्छा ठीक है. Okay, Sanju Verma, you know the one interesting thing in all this list of candidates, your lists are full of dinners. Your lists are also, I mean, your alliance, the likes of Anand Mohan Singh's son has been given. You know, every time I see some BJP leader tweeting, देखिए शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया, आनंद मोहन सिंह के बेटे को भी टिकट दिया गया है. यहाँ कोई दूध से धुला हुआ नहीं है संजू वर्मा जी. Today you have to accept that. The BJP list is full of dinners. Majhi ji, whether it is Kushwaha, all are giving tickets to their family members. Okay, now Rajdeep, Yes, I did not Sanju ji. interject anyone. ये भी परिवारवाद पार्टी बन गई है. अरे भाई साहब, अभी आपने सवाल पूछा है राजदीप जी. यू टेल मी संजू वर्मा, बी पेशेंट. आप भी थोड़ा पेशेंस दिखाइए. यू आर अ सीजन्ड एंकर. आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू गेट घबराइए नहीं एक्साइटेड. संजू जी, जवाब जी, दीजिए. राजदीप, आई डिड नॉट इंटरजेक्ट दिस मैन. आपसे मुझे कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है. अरे शांत हो जाइए. you finish. अच्छा नवल किशोर जी, let her complete. Let her complete. Thank you. मेरा भी ब्लड प्रेशर Thank you. बढ़ेगा. चलिए go ahead संजू जी. मेरा ब्लड प्रेशर सही है राजदीप. आप अपना चेकअप करवाइए. पानी का ग्लास पीजिए. संजू वर्मा की चिंता मत कीजिए. थैंक यू. मैम. हाँ, और राजदीप जी, आपको 14 Okay, ma'am, I have to stop you for a moment because Tejasvi Yadav is. ये आज पार्टी जो है ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में हम लोगों की भाभी भी यहाँ उपस्थित है. ये भी पार्टी की सदस्यता जो है ले रहे हैं और बाकी हम चाहेंगे कि खेसारी जी जो हैं आप लोगों के समक्ष जो है अपनी बात को रखें. सबसे पहले तो आप सबको दिल से धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामना. और भैया को और हमारी दीदी को, अध्यक्ष साहब, हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी चाचा जी, तो सबका प्यार और हमारे सबसे हाँ हमारे अभी भैया हैं जो कि हम लोगों के बड़े भाई हैं, उन्हीं के जीजा हैं, तो हमारे भी जीजा ही हुए. और हमारे चाचा मैंने उनका प्यार मैं ही नहीं बल्कि शुरू से के विचारधारा में रहा हूँ. मैं उस परिवार का हिस्सा रहा हूँ और कोशिश भी यही रहती है कि इस परिवार का हिस्सा बन के मैं जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को एक करके हमारी ताकत बने, उसी तरह हम पूरी दुनिया को एक ताकत की तरफ ले जाएं और अपनी पावर, अपनी क्षमता से, अपने हुनर से, अपने विचारधारा से दुनिया को एक अलग दिशा दें. जो चीज़ें हमारे बीच में अभी तक हम अधूरे हैं, मैं हमेशा कोशिश यही रहा है कि जिस तरह मैं मुंबई शहर में रह के अपने बच्चों का परवरिश कर रहा हूँ, अच्छे स्कूल दे रहा हूँ, अच्छे अस्पताल दे रहा हूँ, उसी तरह हमारे बिहार के बच्चों का भी भविष्य हमारे बच्चों की तरह तय हो और हमारे बच्चों को बाहर गांव ना जाना पड़े. और उस विचारधारा में हमेशा भैया आगे रहे हैं और आप लोगों ने 17 महीने में इनका कारनामा देख ही लिया था. तो एक बार बदलने की ज़रूरत है और उस बदलाव में मैं थोड़ा सा एक मेरा भी हिस्सा हो और मैं उस सरकार को बदलने में और एक अलग दिशा में ले जाने में और एक बेहतर सरकार बनाने में एक मेरा योगदान हो. उसी के लिए मैं भी जुड़ा हूँ भैया से. और आज से नहीं, आज तो मैं आप लोगों के सामने पब्लिकली हुआ, बट मैं हृदय से और दिल से हमेशा से मैं इस परिवार का हिस्सा रहा हूं. और हिस्सा ही नहीं बल्कि एक परिवार का बेटा भी हूं. मैं एक छोटा बेटा की तरह हमेशा प्रयास रहा हूं और चाचा का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है, राबड़ी माता का आशीर्वाद मिला है, दीदी का मिला है, भैया का मिला है, बल्कि इस समाज की और इस परिवार से जो मुझे Lal Yadav has joined the RJD. That's what we are seeing at the moment. Every party is looking for their one celebrity that they can align to them. So if the BJP can find theirs, then the RJD is also trying to compete in that space. But clearly all of this is happening even as there is uncertainty over the Mahagathbandhan itself. As we can see there, Tejasvi Yadav, Meesa Bharti behind him, his sister who is a member of parliament, and clearly the RJD is hoping that they can also add an element of celebrityhood to their party lines. But as we said, I must get a quick word in from Sanju Verma.
I must Rajdeep. take a quick word from Sanju Verma because I interrupted her while this was going on. Sanju Verma, you want to quickly wrap up because as we said that breaking news came in that in this election, there seemed to be every party is looking only at one factor, winnability. Then whether it's a family member, someone with criminal antecedents, celebrities, all that seems to matter is how do we try somehow or the other to win to win the election. इसमें कोई morality नहीं है. Do you agree? A quick response, ma'am. Now, Rajdeep, I need to give a quick response. And on 14th November, आपका blood pressure जरूर बढ़ने वाला है. पानी का glass पास में रखिएगा. I just want to say one thing very clearly. Who are the siblings of Prime Minister Modi? Can I please finish? Who are the siblings of Prime Minister Modi? Rajdeep, do not look at Google. You are a seasoned journalist. I challenge you right now. नरेंद्र मोदी के भाई और उनकी बहन का नाम बताइए. I challenge you. नरेंद्र मोदी के 4 भाइयों और उनकी बहन का नाम बताइए. I will tell you. अमृत भाई मोदी, पंकज मोदी, सोम मोदी, प्रहलाद मोदी and his sister वसंती बहन मोदी. My limited point is this: डायनेस्टी का नाम और डायनेस्टी के बारे में तब बात होती है when somebody uses their political clout to engage in rabid favoritism. नरेंद्र मोदी के 4 भाइयों का नाम राजदीप सरदेसाई बता नहीं सके, despite spending more than 3.5 or 4 decades in journalism. I did an interview. I did an interview with Prahlad Modi, madam. I did an interview with Prahlad Modi, but it is not about Mr. Modi. We are talking about Bihar here. This is your problem. This is your problem. You do not allow the BJP to speak. Unfortunately, I can't tell you fade her down. I can't tell you fade her down. Don't make wrong insinuations, madam. I was giving you full opportunity. We cut out of a breaking news with Tejasvi to hear you. Do not say this. No, you do not say this again, madam. I take strong objection to this. We have cut out from a breaking news of Tejasvi Yadav to hear you. That is called dynasty. Priyanka Vadra's son Rehan Vadra will soon join politics. Okay. 3 generations of the Gandhis are in the parliament at the same time. That is called dynasty politics. And Rajdeep Sardesai, you always draw false equivalences. Let me tell you something. Today you should be asking the Mahathagabandhan with less than 24 hours to go for 17th October when the last day of the first phase nominations have to be filed in. Will Congress get 60 seats? Will it get 55 seats? Will it get 38 seats? Does Rajdeep Sardesai Okay, I've heard you, ma'am. No. Sanju Verma, the problem is... No, I've heard you. Your time is up, ma'am. Your time is up. We've heard you. Who says that? Do not make... Miss Sanju Verma, I have been decent with you every time. No, and you come and make insinuations with no proof, with zero proof. That is your problem. You do not ask take my chair. Why don't you come and become the anchor then? I suggest you take over next time as the anchor since you believe you have the right questions. I appreciate you joining us and I wish you a very happy Diwali, madam. I wish you and everyone else a very happy Diwali.